Hello everyone, this is me Falguni, and today we will start our bootcamp. Along with me, Nivedita Prasad will also will speak about today's topic. And today's content is strings, list, dictionaries. So I will be proceeding with strings and list, and Nivedita will speak about dictionaries. So I will start within a minute. And guys, if you have any doubt when I'm teaching you, please feel free to unmute yourself and ask the doubt. Fine. It should be interactive, not just like I'm speaking only and you guys are just listening. And if you don't want to unmute yourself, you can just use the chat box and I can check that from if you're getting any doubts or not. Okay, so I'm starting. So basically, strings is a data type, and we can define string as a sequence of characters. So a character can be anything, like it can be a, or it can be a, I mean alphabet, or it can be a number like 1 2 3. But when in Python you have to if you want to distinguish a string, you have to use some symbols. मतलब जैसे मैं ए बी सी डी लिख दी नॉर्मली, अगर ए या फिर बी या फिर सी, सो ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, और वेरिएबल में हम कुछ अगर असाइन नहीं करेंगे तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल्स हो जाएंगे. सो जब हम लोग स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते हैं तब हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं. वो दैट कैन बी सिंगल कोटेशन, और इट कैन बी डबल कोटेशन मार्क्स, or it can be triple quotation like this. Well, yesterday we used Spider IDE, but since my laptop doesn't support Spider IDE, so I'm using Jupyter. And if you guys want to use Jupyter, then just go to Start and just scroll down and just go to Anaconda and just go to Jupyter Notebook prompt, and then it will open something like this. Please give a minute if you guys get a lag. Um, and when this prompt will open up with this up to this part, then wait, I'm not getting the starting point. Yeah, up to this part, if it is open up, then just wait for a few seconds. In your default browser, um, of tree will local host will open and something like this will open up. So wherever you want to save your file, just go to that part. Like I'm going for documents, then for my document part. So these are the directories or the folders which you have saved, which you have in your PC or on PC. So go for it. And if you want to open a new notebook, just go to here, new, then open on Python 3. So it will open up like this. So yeah, so this is the terminal shell where we will do the coding part. And yeah, and whatever I will run, I will just tell you about that. So right now I don't want this, so I'm just closing it off. Okay. So as I said, a string can be enclosed within single quotation, double quotation, or in triple quotation. But every quotation mark has a significant value. Just like, let's say I want to give a message. So I take a variable message, it has some value. Let's say hello world, and I'm enclosing it in single quotation. So when I run it, so the type, we use type function to know what kind of data type is message is having. So when I say type, so it shows me that it's a string data type, right?
So, and to run a cell, you can use this run command, or if you want in shortcut, you can use shift plus enter. So, if you press shift plus enter, it will open another line. But if you use control plus enter, this current line will get operated. So, and we can also write the same message in double quotation. See, yeah, and also just I said we can use triple quotation mark also. So let me just assign message triple quotation marks. Hello world. See, we can use three different types of quotation. But since I said everything has a significant part, for example, we want to store a message like if we're using single quotation mark, I am Falguni. See, since you are using single quotation mark, it's enclosing here, right? So I guess a error will pop up. See, it's showing me that it's an invalid syntax, right? So to ignore this part, we can just use double quotation marks, right? So see, it's printing I am Falguni. Now we can use one more thing for the same purpose. Like instead, if you don't want to use double quotation marks and you just want to go ahead with the single one, you can use one operator called escape operator. See, if I am using backward slash, then it's showing me no error. Fine. The same goes with double quotation marks too. For example, if I want to say string in Python can be denoted as str. See, I guess it again it will show an error because you can see the things are changing its color. This color highlight shows us where we are getting wrong, right? So see, again it's showing invalid syntax. So you can just use one thing, can use the escape sequence. Okay, so let me just use once again. Okay, using it wrong space. Yeah, see. So it's showing me now the string in Python is denoted as str. Now, if I want a message in multi-line, right? Let's say I want to write this line only, not this line. Let's say hello world, but hello and world in both different lines. Okay. Um. Yeah. Fine. Let's see, does it works or not? Let's say hello and world, and then let me print message. See, it's showing that EOL while scanning the literal string literal. Now the EOL is its full form is end of line. Now here we if we use so to escape this error we use triple quotation marks. Let's see if it works or not. See, it's showing me hello and world in two different lines. So up to this part, everything is clear. I hope so. Can you just use the chat box or you just unmute yourself and just say hello? Am I audible?
Okay, fine, fine. Okay, so you guys got it right. Um, Now string is an iterable type of object. Like, for example, if I save a message with someone's name, so let's say Shubham, right? So I and I want to print only Shubh. So I I need to do indexing. In strings, indexing is also a part where we can print a string up to certain part. Like, and in indexing, we start it from zero. Like yesterday only, like कल ही हम लोगों ने range के बारे में पढ़ा था. So in that part we discussed like range starts from 0 to n minus 1. For the same thing applies for strings also. Whenever we want to do indexing part, it starts from 0 to n minus 1. And let's say first of all, before that, showing you the indexing part, I just want to show you one more thing. Like, I want to know how many characters are present in this word Shubham, like in message. So we use a function called len, in which we just put up the variable, and just after running this part we get answer as 14. Okay, sorry, Shubha. Okay, hello world. Yeah, the reason why hello world is given as 14, because hello is a 5, world is a 5, 10. After world and hello, there are two spaces, so 12. And before hello and after world, we are giving uh, enter. We are pressing enter. So that enter is denoted by slash n, which means new line. So that's why it's showing me 14. But for the sake of simplicity, let me show this Shubham. Shubham is of 7 characters. SHUBHAM. If you count it by your fingers, it will show me 7. And whatever the length of Shubham is, it's showing me 7. Now, let's come to the slicing part. So, since the message is Shubham, I want to print only Shubh. So, I say that indexing starts from 0 to len minus 1. Length of the message minus 1 part. So it indexing will be, we use square brackets for indexing part, right? When we are slicing, so we use indexing. So I want to print Shubham. So it will start from 0, which there are 3 parts while we do the indexing. The start part, the end part, and the jump part. If we ignore the jump part, it will by default take +1. Okay. So Shubh. So Shubh is SHUBH. Like it's the fifth. So 5 minus 1 will up to 5 it will run. See, because it's 0, then 1, then 2, then 3, then 4. As I told you that it will run from 0 to 4. Means up to n minus 1. And now if I want that I want to skip by 2 letters. Okay, so I will just put up 2. So if I run it, see, H is skipped, U, B is skipped, H. So len and indexing part is clear up to this now. um am I audible? Like you guys are getting what I want to say? समझ में आ रहा है सबको? Yeah. Okay, okay, fine. So now I just want to reverse the message. Like it's Shubham, but I want to print it as MAHBUHS. Right.
So for that, we just assign message Shubham, and you guys know number system, right? So it will be very easy for you. Like in our number system, while we are considering whole number, it starts from 0, 1, 2, 3, 4, right? And whenever we make a graph, there are two coordinates, x and y. So ignore the y coordinates, just think of the x coordinate, that is the one dimension. So from to the left side of the 0, it's there is negative part, यानी 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, लाइक -1, -2, -3, -4, -5. सेम अगर ओके मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ. See, Shubham, right? So its indexes is 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? And if we consider negative indices, it will be -7, -6, -5, -4, -3, -2, and -1, right? So if we want to print it in reverse part, we just need to do starting from -1, it will end at -7, and the jump will be of -1, like it will go backward. So it's showing error. Oh, sorry, We I are used using the normal basis. Yeah. yeah, got that. See, it's showing me in the reverse part. Okay, so are you guys clear with this reverse indexing part? And since strings can be iterable, as you guys have learned loops, so we can iterate it using loops also. For example, for I in range of -1 up to -7. Sorry guys, just a minute. Hello, am I audible? Sorry guys for Yes. the network issue. Sorry guys for the network issues. So what I was telling you that we can print using indexing plus with for loop. Like from -1 to -8, we are jumping backward for -1. So we will print since it's a string, so we can use indexing, which I told you. So I is the variable which starts from -1. It will end at -7, and the jump will be backward. So you can see it's showing as MAHBUHS. Okay, so we reverse करते कैसे है ये समझ में आ गया तुम लोग को string. And one more thing, I forgot to it was my mistake, sorry for that. um yeah, so if I want to print a message directly by using indexing, it should be -1, -8, -1. So it will also show me the same output. Okay, so you guys got it how to reverse a string.
and how you can print from between. समझ में आ रहा है ना सबको? तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. Yes, yes, yes. ओके फाइन. तो मैंने स्लाइसिंग बता दिया तुम लोगों को. So now we can take input from user just like we did for mathematics part, like for integer part, for float part. Okay, but there's a difference when we talk about numbers, right? In string, a number is a character, but we if we use it like in int, like int data type or float data type, it's a different thing. So मतलब जैसे मान लो मैं 2 + 3 करती हूँ मैथ्स में, like generally. Let me print it. Okay, value. So it will give me 5. But if I print string 2 plus string 3, it's giving me 23. So इसको हम लोग बोलते हैं string concatenation. This is called string concatenation. So ये सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, ये ऑल टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए है. इफ आई जस्ट वांट टू प्रिंट hello world using concatenation, you can just use this and you are good to go. But you can see there is no space between hello and world, so you need to put that, right? So just use again in the same way and you are good to go with the hello world. So string concatenation समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Okay, fine. So let's take some input from user. Okay, so let's say I want to take marks of some subject. We take it as int and thus we take the input. Okay, so now I want to print that my marks in in this subject is right. Just use plus and marks. Let's see what it gives me. So it's asking me for input. So let's say I got 25 marks. Let's see what it shows me. See, it's giving me a error. So what's the error? Can only concatenate string, not int to string. That means we can't use a integer explicitly or any float value explicitly along with string. To convert them into string, we just have to type it. So what I will do is I will just copy it, let the error be there so that you can understand. I will just make the marks as string data type. So let's see what it shows. Okay, again I'm getting 25 marks. Now my marks in the subject is 25, or I forgot to give a space. Let me give that one. So 25. Now marks is 25. So you got that now, how to convert. And it might be possible that I got a input. By default, any input is in string format. Like if I just throw an input to the user, and my computer will consider it as string. So if I print, so just a minute guys. So if I use the same line, but for this time I'm not using any string data type. So let's say I'm giving my marks 25. So my answer is, because it's already taking it as in string data type. If you want to check that what data type it is using, just use the function type and use marks. So right now it's string, but when I was using this part, so if I run it again, it's int. Okay,
So to convert string, so if marks I'm getting as input of string, I can just use to make it integer. So when I will print its type marks, so it's me getting me the class of int. Right now my marks, my the value I assigned to marks was string, but since I changed it to int, it's giving me class int. So टाइप कन्वर्जन समझ में आ गया? मतलब अभी इसमें कुछ डाउट है किसी को? कुछ डाउट है तो पूछ लो. Didi, please. अच्छा दीदी just क्या ऐसे ओके. हेलो. हाँ दीदी आई वांट टू आस्क दैट वो जो ऊपर वाला जो प्रोग्राम था उसमें तो मार्क्स तो इंट है तो उसमें हमने str क्यों यूज किया लाइक इट इज नॉट अ स्ट्रिंग ओके, सो ये वाला बोल रहे हो, ये लाइन हाँ में जिस हाँ लाइन हाँ में भी okay, हाँ okay. So see, I am getting input in int value, right? It's an integer. Okay. So I have to change it because I got a error in earlier part. What was the error? Can concat string, not into string. We general in Python to denote in Python to denote string we use str in short. हम पाइथन में str को एज अ स्ट्रिंग बोलते हैं. ओके, डाउट क्लियर हुआ? मतलब समझ में आया? ओके, फाइन. सो लेकिन वो वाला ही तो समझ में आ रहा वो जो मार्क्स तो हम लोग लाइक आपने पहले इनपुट दिया 25 तो लिख कर माय मार्क्स इज इन द सब्जेक्ट इज 25 तो वो जो या 25 को वाई वे लाइक राइटिंग इज अ स्ट्रिंग लाइक वो तो नंबर ही तो है नहीं, नंबर है. सी द थिंग, वही मैं बता रही हूँ. आई एम टेकिंग इट एज अ इंट, बट आई कांट यूज इंट एंड स्ट्रिंग डायरेक्टly with each other. I have to convert that int into string. You Oh, got okay. that? Oh, okay, okay, okay. ঘটাতে হবে ঘরে Acha. So this was some part which I want to tell. Now let's see. I just want to give my I just want to change my message, which is completely in uppercase, like hello, into lowercase. Like it should be from hello to hello, right? For that, we can use a function called upper. So simply we will use the upper function, message dot upper. See, my sorry, it should be lower. My sorry for that. मतलब मैसेज को मैंने पूरा अपर केस में लिखा, बट मुझे अब उसको लोअर केस में शो करना है. सो इट विल रिटर्न मी द आंसर हेलो लाइक इन लोअर केस. बट हमको वही अब मुझे जैसे मान लो यही चीज करना है जस्ट रिवर्स में, यानी ये हेलो पूरा स्मॉल कैप में है एंड आई जस्ट वांट टू डू दिस लाइक इसको स्मॉल से अपर में जाना है, तो जस्ट यूज अपर फंक्शन. It will giving me upper function. Now I just want to use my H to be just in capital letter. So like in sentence case, that's like the normal way we write a sentence. Like my marks in this subject is a dash. So like you can see M is only capital and everything is in small. Right. So let me show it here only. Hello, my name is Falguni. So this is my message. So I will use the function title. See my name. So it's giving me every letter in capital letters. In title we get everything. Okay, sorry, I just got wrong. We use title to get every
first letter of the word as capital. But if we use want to just get one letter, that is the first one, we use capitalize. Yeah, I'm getting. H is capital, but and everything is small, like in sentence case. So upper, lower and ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ये वाला फंक्शंस जो भी था, अपर लोअर कैसे करते हैं, टाइटल. Yes. ओके फाइन. सो अब जैसे मेरे को देखना है that my message is in which case, like in upper case or in lower case, right? So I will just print message in see my message was in lowercase. So to check whether it is in lowercase or uppercase, I will use the function is lower. So since the condition is true, I'm getting a bool value of true. In Python, in Python, we get true and false as bool value. They are the boolean values. Okay. So right now you can see message is true, but the function is giving me the value of true. Now if I want to check that it is the all characters are in uppercase, so I just check it like this, and see it's giving me false because every letter is in small letter. But in case we just do like hello, then it's giving me true. Again I use it as lower, so it's giving me false. So let's take another example. Uh, like we just got that my name, hello, my name is Falguni, like in this. Like I want to check it whether it is containing any number or not, right? So see, my message does not contain any number. It's purely a string, so it's giving me false. Like if I put 777, so it's giving me true. Fine. तुम लोग को ये लोअर अपर फंक्शन समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूं कि इसमें कुछ डाउट है? Yes, Di. ओके. एक नहीं, सब लोग लिखो. तुम लोग एक जन के बोलने में सबको देखने में, लाइक आई एम टीचिंग टू एवरीवन ना, सो तुम लोग को लिखना है तो एवरीवन गॉट इट. लाइक तुम लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो. थोड़ा इंटरेक्टिव करो सेशन. So I got a question, what we put hello 99. So we will use function. Thank you for reminding this part. Like hello 99. So we will use is al num. Let's see what it gives me. False, because the space between the two word, like the two string is there, and space is not a alphabet or a number, it's just a character, right? So if I remove the space and write, it's giving me true. Did you get it? Pavan asked me this question. Did you get it? For checking is digit. Okay.
Is it? Yeah, I just showed you. Like I typed the message as 777 that it's just a number. It's giving me the value of true. If I put like any number with the alphabet like A B C D, it's giving me false. Like it's not just having the number or digit. It's just giving me the it's just have not having just the number. मतलब इसमें सिर्फ number नहीं इसमें और भी alphabets and characters है. So that's why it's showing me the false. राइट सो स्ट्रिंग में इतना ही था मैं इसको मतलब थोड़ा हाई हो जाएगा मैं जो बता दूंगी तो फिर तो मैं स्ट्रिंग के लिए इतना रखती हूँ तुम लोग को स्ट्रिंग में अब कोई डाउट है इसमें यानी ये बहुत बेसिक था जो मैंने पूरा बता दिया है स्ट्रिंग से रिलेटेड नाउ यू गाइस कैन मैनिपुलेट यूजिंग स्ट्रिंग अगर तुम लोग को कोई डाउट है तो बताओ मैं एक तुम लोग को छोटा सा गेम दिखाऊंगी इसमें स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करके एनी डाउट यू गाइस आर गेटिंग No. Okay, fine. So, okay. So, a game hai, which we call as Pig Latin game, which is nothing but word manipulation. Like हम इसमें word manipulate करते. For example, we just take word apple, and you can see like एक मैंने word लिया apple, right? अब apple को मैं manipulate कैसे करूंगी? Apple एक सफिक्स लगा के अब मान लो कोई वर्ड है जिसका स्टार्टिंग लेटर अल्फाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट है यानी मान लो बिग इज अ वर्ड सो मैं इसको कैसे प्रिंट करूंगी IGBAY ओके सो आई विल पुट माई वर्ड लाइक दिस सो ये पिग लैटिन गेम है इसके बहुत सारे वेरिएशन है बट आई एम ये showing you the most basic one like you got the logic right like हम words को कैसे manipulate करेंगे you guys can use chat box or anything just reply something like I'm just not want to like just only talking person here you guys can interact with me I'm not getting any responses am I audible or is just me Yeah, Yeah, talking yeah. yeah, you're Yes, yes, you are audible. audible. You are audible. You are Falguni, audible. can you oh, repeat that? Yes, yes. okay फिर से okay बोलो ना. अच्छा ठीक है मैं पूरा बताती हूँ ये पिग लैटिन एक गेम है इट्स जस्ट अ वर्ड मैनिपुलेशन गेम इसमें हम वर्ड को कैसे मैनिपुलेट करते हैं जैसे एप्पल है अब एप्पल का जो स्टार्टिंग लेटर है यानी अल्फाबेट है वो क्या है ए क्या है एक वॉवेल है ठीक है अब ये मुझे चेक करना है कि कोई वर्ड है उसका स्टार्टिंग में कोई वॉवेल हुआ तो मैं उसको एज इट इज प्रिंट कर दूंगी विद अ सफिक्स ऑफ AY a suffix can be anything like मैं AY ले रही हूँ उसके बहुत वेरिएशन है if you guys can google it like pig latin algo ले लो ट्यूटोरियल ले लो जो भी कर लो सो यहाँ पे बहुत सारे ओ यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है सॉरी आई गेस एल्गोरिथम विल बी द राइट वर्ड या इन पाइथन और इन सी लाइक यहाँ पे पाइथन मैंने लिखा था तो तुम पाइथन में चेक कर सकते हो एंड इफ यू जस्ट वांट टू नो द एल्गोरिथम एंड वांट टू कोड इट इन योर वे यू जस्ट गाइस कैन शो द पिग लैटिन लाइक यहाँ पे एक पिग लैटिन का था बट दैट वाज काइंड ऑफ टफ सो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट मच टाइम ओवर हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट मेरे पास वो है वो उसको मैं असाइनमेंट दूंगी तुम लोग करना यही तुम लोग का आज का असाइनमेंट है स्ट्रिंग्स से सो लाइक एक वर्ड मुझे यूजर देगा फॉर दैट वी विल जस्ट टेक वर्ड विच विल गेट मी फ्रॉम द यूजर सो आई विल यूज इनपुट एंड तुम लोग जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग बोलते हैं कि एंटर योर नंबर यू कैन यूज बोथ वेज लाइक प्रिंट एंटर योर नंबर sorry word pardon please so you can use like this also or you can directly just use whatever you want to write in input function only it will be in same line it's just the difference was that it will be in same line if I use word and input and just put my wordings whatever I want to write but अगर तुम लोग जैसे print use करोगे तो जो input आएगा वो next line से वो next line में आ जाएगा यानी उसका input जब दोगे वो next line में रहेगा ठीक है तो मैंने word लिया अब vowels एक मैंने वो लिया क्या बोलते हैं वेरिएबल लिया राइट सो vowels वेरिएबल में
क्या क्या आएगा, A E I O U, ओके, स्मॉल में और कैपिटल में AEIOU। अब ये जो मैंने लिखा दोनों तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि अब वो यूजर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो फर्स्ट लेटर छोटा देगा कि बड़ा देगा, दैट्स नॉट इन अवर हैंड, सो जस्ट वी वांट टू कीप इट सेफ। मैंने एक सफिक्स लगाया वेरिएबल दैट इज AY, so we will take it as AY. Okay, so I will get a loop. And just lost some in way. Yeah. So we just want to see that the first letter is vowel or not. We have taken a string which is having AEIOU in both capital and in small. So like this, in this way, I want to also tell you that how we can search a part of word within another word, right? So if the word zero, like I just told you that whatever the number, whatever the string will be there, the first letter will be having the index of zero. So if it's in like this way, zero and vowels. If the first letter is vowel, that means if it is present here, so it will give me the answer. Yeah, word plus suffix. Else, if word zero not in vowels, print word one after that, because the second letter have the index of 1, and after that we just want the complete word, so we are just leaving this part, so it will get that I have to print from 1 and complete it up to the end part. Then I have to print the suffix part. Sorry, first letter, right? For that I have to go for the word 0, then for the suffix part. So let's see if this works or not. If I am printing apple, I'm getting the word apple. Yeah, it's showing me apple A. And if it's I'm showing big, it's giving me ek pe. I'm sorry guys, I'm just getting some network issue. That's why I just left for a while. But तुम लोग को ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया? ये वाला जो मैंने थोड़ा गेम टाइप, मतलब गेम नहीं है, it's just an algorithm for the pig Latin and it's one of the variation. Didi, समझ में आ गया तो Can थोड़ा सा can you चार्ट explain में it बता once दो. more? Can you Didi, can you explain it explain once the more? last line again? समझ में आ रहा है? मैं audible or just talking with myself only? You are audible Can you now. Didi, explain can it you once more? explain the I'm last saying. line again? Okay, I'm getting. Okay. So here I end the strings part. Like it's okay for today's. Like you guys are beginner. Now let's get for that list part. So list is a type of Falguni, op. Yeah. sorry to interrupt. They are asking to explain you the last line of the that code. Oh, sorry, I just skipped that part. Okay, the which line, Nivi? That print one. They are asking for the Hello. last Next, line. Okay. give me time. So okay, The okay. if elif part, that one. Okay. The elif part, right? So elif part means the word zero, like the vowel part. If it's not vowel, right? How can we know it's not vowel? That is when it is not present in vowels part. मतलब मान लो जैसे big है, big में b is consonant. अब मुझे big, अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि vowels क्या होते हैं. हमको पता है AEIOU होता है, बट कंप्यूटर को तो नहीं पता. आई हैव टू स्पेसिफाई दैट पार्ट. तो बस यही बताया है कि वर्ड जो जीरो है वो अगर वॉवेल में नहीं होता है, नहीं है जो कि,
तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, इट्स नॉट प्रेजेंट, तो मैं ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करूंगी जहाँ पे वर्ड 1 से लेकर एंड तक, यानी मैंने यहाँ पे जैसे मैंने तुम लोग को बताया ना कि अगर यहाँ पे जैसे ये पार्ट मिसिंग हुआ तो समझ जाना कि एक एक का जंप ले रहा है, वैसे अगर जो एंड पार्ट होता है अगर मैं उसको एज इट इज छोड़ दूं ना, तो वो 1 से मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया, यानी यहाँ से मैंने 1 से स्टार्ट किया था, तो ये उसके पूरे एंड तक जाके उसको वो करेगा, ठीक है। और वर्ड 0 यानी मैंने बताया था कि ये गेम जैसा, यानी इसमें हम लेटर को जैसे मैनिपुलेट करें, तो यहाँ पे मेरे को बिग B is a consonant, that's why I want to print it at the end of the word. So मैं उसको वर्ड के एंड में प्रिंट करती हूँ, तो 0 है। आई एम जस्ट टेलिंग द ओनली इंडेक्स, लाइक मुझे सिर्फ मैं सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स बता रही हूँ कि मुझे कौन सा इंडेक्स चाहिए, मेरे को 0 इंडेक्स में जो वर्ड है वो चाहिए, तो B था तो B आया, और उसका सफिक्स में मैंने ए वाई लगाया तो वो ए वाई आ गया, तो इसलिए यहाँ पे बिग का जब मैंने लिखा तो उसका वर्ड का आंसर एक बे आया, तो समझ में आ गया, लाइक यू गॉट इट। Yes, now it's clear. ओके ओके फाइन। सो अभी हम लोग लिस्ट देखेंगे। लिस्ट जो होता है ना, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स ना सेम डेटा टाइप के हो ये जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी अ स्ट्रिंग, it can be a number like integer, it can be float, it can be anything, any data type, whatever present, whatever we have in Python we can use it in a list. And list में भी एक चीज है, sorry list तो एक कीवर्ड हो गया, I can't use it, so I'm taking it as li. So list में भी ना ऑलमोस्ट स्ट्रिंग जैसे सारे फीचर्स है, यानी हम जो स्ट्रिंग में इंडेक्सेस यूज किए हैं हम ये लिस्ट में भी यूज करते हैं, बट इट्स बिट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग। अब मैं लिस्ट में जैसे मैं इसी को ले लेती हूँ, जैसे मुझे लिस्ट का लेंथ जानना है, तो सेम यू गाइस कैन गेस कि इस लिस्ट का लेंथ कितना होगा, लाइक मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट दिया है ना, तो मेरे को जस्ट जानना है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो यहाँ पे, क्या कितना लेंथ हो सकता है इसका। You guys guess, then I will execute the program. Any guesses like 1, 2, 3 length, 4, 5, whatever. Any random guess karo, like I just want to make it interactive. No guesses. ओके सो देखो लिस्ट में मैंने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए यहाँ पे 3, सो आई विल जस्ट यूज इट 3, आई विल गेट इट्स लेंथ एज 3। यहाँ पे मुझे इसका लेंथ जो है वो मुझे 3 मिल रहा है। सो मैंने जैसे बताया कि इसमें कुछ भी टाइप के डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी इटरेटेबल होते हैं, यानी अगर मैं लेंथ इसको मेरे को इटरेट करना है, यानी पहले मैं लिस्ट को ना नॉर्मली प्रिंट करती हूँ, ठीक है, तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है, ऐसे कर्ली लाइक वी आर यूज गेटिंग दैट बिग ब्रैकेट्स, देन वी आर गेटिंग कोटेशन मार्क्स एंड ऑल। अगर मुझे इसको रैंडमली प्रिंट करना है, लाइक नॉट रैंडमली, लाइक 1 by 1, so मैं just I will use a variable like I and I'm using that variable in li, like अगर मैं ये एग्जीक्यूट करती हूँ प्रिंट, अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ ना, तो ये जो तुम लोग को दिख रहा है ना कोटेशन एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दैट कॉमा पार्ट, ये तुम लोग का ऐसा आ जाएगा। एक 1 by 1 आया क्योंकि प्रिंट बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन ले लेता है जितने बार भी लूप रन करेगा, और जैसे मान लो मुझे इसको साइड बाय साइड करना है, सो आई एम गेटिंग इट्स दिस, सी आई एम गेटिंग दिस साइड बाय साइड, मान लो मुझे सिर्फ इसमें कॉमा चाहिए एक के बाद एक वर्ड के बाद, सो इट्स गिविंग मी लाइक दिस कॉमा, ठीक है, ये भी इटरेटेबल होते हैं। एंड या सो अब जैसे मैंने बताया इंडेक्स, जैसे मुझे इस लिस्ट में मेरे को 5.4 प्रिंट करना है, और जैसे मैंने बताया था कि इंडेक्स हमेशा 0 से लेकर टू n-1 तक चलता है, ठीक है, तो मुझे अगर इसका सिर्फ लास्ट वाला प्रिंट करना है, आई कैन सिंपली यूज वन थिंग, जस्ट टाइप प्रिंट एंड उसका लेन ले लो,
लाइक हम कभी भी लिस्ट करते हैं ना, तो उसका भी इंडेक्स हम लोग ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, लेन -1 कर दो। ओके, बिल्ट इन फंक्शन। Okay, sorry. Len, I just took it as len. Still forgot to use the li part. Like, see, I getting that to 5.4. That means the len ni is 3, -1 is 2, and li of 2 is 5.4. So इतना हमें डाउट है अभी किसी को लिस्ट में, लिस्ट क्या होता है, हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो कैसे मुझे आउटपुट दे रहा है, तो हम उसको कैसे इटरेट कर सकते हैं, and if I want to print a number, specific number, ये समझ में आ गया लिस्ट का? Yes. ओके, सो एक काम करते, चलो एक दूसरा लिस्ट बनाती हूँ मैं सिर्फ नंबर्स के लिए। आई एम टेकिंग नंबर एज 1 2 3। ठीक है, अब मान लो Falguni, मुझे सारे, हाँ हेलो, sorry to या disturb. Can you repeat it again? विच Loop. पार्ट, लाइक कंप्लीट Loop. लिस्ट No, no, ऊपर loop. से, ओ कौन, लूप, ओके। सी, ये जो आई वेरिएबल है ना वो इटरेट कर रहा है, लिस्ट इटरेटेबल होता है, यानी वो एक एक में जाके चेक उसको प्रिंट करा रहा है, यानी पहला आई का जो पहला वैल्यू वो ए है, ठीक है, तो वो ए प्रिंट कर देगा, फिर सेकेंड बार जब जाएगा तब वो 1 को प्रिंट कर देगा, जब वो थर्ड में जाएगा तब वो उसको थर्ड वाले जो क्या होता है एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। यही लूप चल रहा है। एंड अगर इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझना है, को मैं तुम लोग को और सिंप्लीफाइड वे से बता देती हूँ, रेंज से। फॉर आई इन रेंज, ये रेंज कितना तक जाएगा, लेन तक जाएगा, लेन ऑफ एल आई, ठीक है। सो आई विल जस्ट प्रिंट एल आई, यानी ये 0 to 2 तक चलेगा, 0 1 and 2। तो ये देखो, ये अगेन ऐसे एक और बार, यानी हम इस चीज को दो बार यूज कर, दो तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो तुम लोग चाहो, बेटर है तुम लोग यही करो, रेंज तुम लोग को ज्यादा इजी पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू जस्ट प्रिंट इट लाइक दिस कॉमा एंड विदाउट कॉमा, लाइक आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट विदाउट कॉमा। So yeah, A1 and 5.4 will print like this in a single line. ठीक है, समझ में आ गया जिसको डाउट था लूप में कैसा आया? ओके ओके, सो ठीक है, तो हम लोग अभी लिस्ट लिए, इसमें नंबर्स है बहुत सारे, ठीक है। अब मुझे सारे नंबर्स को ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो आई विल जस्ट डू प्रिंट ली, सो इसमें देखो तुम लोग को सारे, ये जो सारे नंबर्स है वो 2 बार आ गया, यानी ये लिस्ट, ये स्ट्रिंग में भी मैं बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। जैसे स्ट्रिंग में ना मुझे नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे प्रिंट करना है, लाइक मैंने एक मैसेज दिया, इसमें मैंने लिखा हाय एंड आई वांट टू प्रिंट इट 2 times, so I just print message into 2. Hi is not defined. Oh, sorry, I just forgot to do the quotation marks. Yeah, like it's printing hi. So you can just print it. एंड एक और लिस्ट का ऑपरेशन होता है, लाइक तुम लोग पूरा नंबर नहीं कुछ भी ले सकते हो लिस्ट में, जस्ट आई विल टेक 1 2 3, है ना। अब मान लो मुझे एक और लिस्ट मैंने बनाया, लाइक दिस इज लिस्ट 1, उसके बाद लिस्ट 2 है, इस लिस्ट में 4 है, 4 5 6। अब इसको ना मैं, अब लिस्ट में मुझे लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को भी ऐड करना है, ठीक है। So I just want to print it like in this way, 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6। So इसको प्रिंट कराने के लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगी, list1 dot extend list2।
सॉरी, इसको प्रिंट नहीं किया मैंने। भेजो ना कि तो प्रिंट नन क्यों आ रहा है? ओ ओके, या मैं एक चीज गलती कर दी इसमें। इसमें क्या आया कि ये नन इसलिए शो किया क्योंकि ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। दिस एक्सटेंड फंक्शन इज रिटर्निंग मी नथिंग, आई जस्ट हैव टू प्रिंट li1। सी ये ऐसे प्रिंट हो रहा है, लाइक इट गेट्स दिस टू लिस्ट गेट्स सबमर्ज इनटू वन। अब ये लिस्ट को हम एक और तरीके से अपेंड कर सकते हैं, यानी li2 को li1 में हम एक और तरीके से अपेंड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। एंड एक्सटेंड फंक्शन ना जो भी तुम्हारा लिस्ट होगा, यानी लिस्ट 2 को ना हमेशा एंड में डालेगा, ठीक है। तो जैसे मुझे li1 में li2 को इंसर्ट करना है, li1 डॉट, इसमें मैं अपेंड करूंगी, अपेंड फंक्शन यूज करूंगी, बट ये थोड़ा डिफरेंट एक्सटेंड से। इसका रीजन है li1, सी ये मेरा लिस्ट 1 में अभी ये था ना, एंड लिस्ट 2 में ये था। इसने ना डायरेक्ट जो लिस्ट था ना उसको लिस्ट में इंसर्ट कर दिया। ओके, सो इसको हम लोग अपेंड को जनरली यूज नहीं करते हैं। अगर हमको किसी दो लिस्ट को एक साथ करना हो हम लोग एक्सटेंड यूज करते हैं। बट इफ आई वांट टू जस्ट ऐड सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी मान लो सिर्फ मुझे li1 में एक दूसरा लिस्ट बना लेते हैं, li1 दैट इज अप टू 3, और जस्ट मैंने li1 में अपेंड कर दिया 4, and after that if I print li1, सी ये सिर्फ एक था बोल के इसको नॉर्मली उसने ऐड कर दिया लास्ट में। अब मान लो मुझे कहीं बीच में इंसर्ट करना है, ओके, सो आई एम इंसर्टिंग इट इन बिटवीन। तो मैं जैसे यही वाला मैं ले लेती हूँ लिस्ट, ठीक है, और इसमें मैं li1 में डॉट इंसर्ट, मुझे ये 0 1 के बीच में इंसर्ट करना है, तो आई विल जस्ट यूज 1। मुझे क्या इंसर्ट करना है? 1, सो आई विल प्रिंट li1। सो देखो इसमें 1 1 1 1 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब मान लो मुझे 3 को बाहर करना है, डिलीट करना है, 3 को डिलीट करना है। सो मैं li1 डॉट पॉप फंक्शन, सिंपल पॉप फंक्शन करोगे सो इसमें शो कर देगा कि कौन सा बाहर हुआ, तो वो 3 आएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर प्रिंट li1 करती हूँ, सो इसमें देखो अभी 1 1 2 दिखा रहा है। ये वाले फंक्शन समझ में आ गए, अपेंड, एक्सटेंड, पॉप फंक्शन। तो मैं फिर आगे बढ़ूंगी लिस्ट के लिए। या समझ में आया। ओके, समझ में आ गया, फाइन, ठीक है। तो ये पॉप फंक्शन हुआ। अभी मेरे को मान लो 2 का इंडेक्स चाहिए, ठीक है। सो आई विल जस्ट सिंपली राइट प्रिंट li1 dot index of which part 2. So I will just put it. So see you can getting the right answer, like 0 1 2 है तो 2 का इंडेक्स 2 ही है यहाँ पे, ठीक है। मान लो मुझे पॉप करना है किसी पर्टिकुलर स्पेस से, यानी मान लो मुझे 1 को आउट कर देना है वहां से, फर्स्ट वाले 1 को, तो आई विल जस्ट डू pop function li1 dot pop 0. So it popped out the 1 and after I print li1 it's just showing me 1 and 2. So ये pop function समझ में आ गया। ये pop मतलब हम अगर पॉप के फंक्शन में हम कुछ अगर डिफाइन नहीं करते ना कि कैसे हम कौन सा हमको इंडेक्स से पॉप करना है, तो वो 3 देगा, मतलब लास्ट वाले को पॉप कर देगा। अब मान लो कि जैसे मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि ये 0 है करके, कि मुझे 0 पार्ट से माइनस करना है, तो वो फिर तुम्हारा
जो है उसी को पॉप कर देगा, वहीं के इंडेक्स के एलिमेंट को पॉप कर देगा। तो यहाँ पे देखो 1 and 2 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पार्ट? दीदी ये पॉप वाला दोबारा से बोल सकते हैं? अच्छा, देखो, अगर मैं चल एक लिस्ट बनाती हूँ, नेम्स का कुछ एक लिस्ट बनाते हैं, नेम लिस्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें मैंने नेम दिया, एक का नाम दे दिया मैंने XYZ, एक का मैंने दे दिया नाम ABC, एक का मैंने दे दिया JKI। ठीक है, ये मैंने जस्ट रैंडम दिया है, डोंट टेक इट सीरियसली। अब जैसे मैंने नेम लिस्ट में से मैंने सिर्फ पॉप फंक्शन को यूज किया ना, तो ये सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट को हटा देगा, बट एंड इट विल ऑल्सो डिस्प्ले कि वो कौन से एलिमेंट को पॉप कर रहा है। सी, इसने JKI को पॉप कर दिया। अब मैं अगर नेम लिस्ट को प्रिंट करती हूँ, सो इट विल बी XYZ एंड ABC। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया पॉप का? कोई पूछ रहा था ना पॉप के लिए। हाँ हाँ। अच्छा वो क्या हाँ कंपल्सरी वो लास्ट वाला एलिमेंट ही वो पॉप होगा? हाँ, वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले एलिमेंट को ही पॉप करता है। अगर मैंने इसे स्पेसिफाई कर दिया, मतलब मान लो जैसे मुझे अब XYZ को पॉप करना है, तो मैं यहाँ पे ना ये वाला फंक्शन में जस्ट मेंशन कर दूंगी कि मुझे XYZ, अब XYZ का मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स है, राइट? तो मुझे तो अब इतने सारे एलिमेंट्स का तो मैं अब इंडेक्स नंबर तो याद नहीं रख सकती, सो आई विल जस्ट यूज नेम लिस्ट इंडेक्स। हम इंडेक्स फंक्शन से इंडेक्स फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो मैंने ऐसे इंडेक्स को फाइंड आउट किया, तो किसका मुझे इंडेक्स चाहिए था? XYZ का, XYZ। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंडेक्स नंबर देगा, और ये जो इंडेक्स नंबर मुझे मिलेगा वो पॉप लेगा उस नंबर को, देन वो इस XYZ को पॉप आउट कर देगा। अभी देखो ये शायद अभी तुम लोग को दिखेगा XYZ पॉप आउट हो गया। तो अब देखो मैं जब इसको रन करूंगी तो इट्स जस्ट गिविंग मी ABC। पॉप फंक्शन क्लियर हो गया? फाल्गुनी, हाँ, पॉप को उसमें यूज कर सकते स्ट्रिंग में? पॉप को ना स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। एंड व्हाट मतलब अबाउट द मैंने लेंथ? लेन को हम स्ट्रिंग एंड उसमें दोनों में यूज कर सकते हैं। सी, मैंने मैसेज का बता देती हूँ। जैसे मैसेज में मेरा नाम मैंने डाल दिया अपना फाल्गुनी, राइट? माय नेम कंटेन्स 7 लेटर, एंड मैंने एक लिस्ट बनाया। चलो मैंने नेम लिस्ट ही ले लेती हूँ, ये वाला, उसको मैंने असाइन किया। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रही हूँ, मैं पहले लाइन में प्रिंट करूंगी मैसेज का लेन। ठीक है, और सेकेंड लाइन में मैं प्रिंट करूंगी लेन ऑफ नेम लिस्ट। ठीक है, तो देखो मेरा नाम में काउंट कर लो, FALGUNI 7, एंड यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो इसका लेन 3 आ गया। सो लेन कैन बी यूज फॉर स्ट्रिंग एंड लिस्ट। लाइक स्ट्रिंग अगर समझ में आ गया तो लेन के लिए भी वो बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती है। थैंक यू। ओके, ठीक है। अब मान लो मुझे इस नेम लिस्ट को ना सॉर्ट करना है। नेम लिस्ट को नहीं करते, नॉर्मल एक रैंडम नंबर वाला लेते तो ज्यादा इजी पड़ेगा। सो आई टेकिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर लाइक 7, 8, 5, 2, 3, 6। लाइक मैंने इसको ले लिया। अब मैं इसको ना सॉर्ट करती हूँ, आई एम यूजिंग सॉर्ट, और देन आई एम प्रिंटिंग इट। तो ये मुझे ना वन एज इट इज सॉर्ट करके देगा, यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको डिसेंडिंग फॉर्मेट में करना है। ये मुझे बाय डिफॉल्ट अगर मैंने सॉर्ट को एज इट इज यूज किया तो वो मुझे असेंडिंग देगा, बट अगर मैंने इसका रिवर्स तो ट्रू कर दिया ना, बूल इसकी वैल्यू अगर मैंने ट्रू कर दी रिवर्स की, तो ये मुझे जस्ट उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा। एंड दिस इज सेम फॉर स्ट्रिंग्स ऑल्सो। लाइक अगर ये इस टाइप का नेम लिस्ट वाला जो स्ट्रिंग्स है, ये वाले के लिए भी ये पूरा ट्रू है। अगर मैं इसको सॉर्ट करती हूँ
So I will get name list, कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे. So A B C D J K X Y Z आ गया. And if I want to reverse it, so मैं just इसके reverse की value को true कर दूंगी and it will get reverse. And अगर जैसे ये कोई random मैंने number लिया है, जैसे इसमें कोई arrangement नहीं है and I just want to reverse it, यानी जो last में था उसको मुझे first में लाना है, ठीक है. Just use the function of reverse and it will just reverse it. इसमें ascending descending वाला option नहीं आएगा. If you are reversing a list, it will just reverse it. It will not see whether it is arranged in ascending order or in descending order. तो reverse and sort समझ में आ गया. तो मैं आगे फिर बढ़ती हूँ. And yeah, you can do one more thing. जैसे मैंने यहाँ पे जो vowels लिया था, ये अभी एग्जाम्पल था, ये वाला, ठीक है. आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज ऑन दिस पार्ट ओनली. सो ये जो वॉवेल्स था, इसको हम डायरेक्ट लिस्ट में भी एक्सप्लिसिटली वो कर सकते हैं, टेक मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक अगर मैं सिर्फ वॉवेल्स को लिस्ट कर दूं, वॉवेल करके, एंड देन आई जस्ट प्रिंट vowels. See, it took each and every element and just each and every letter from this string part, and it's just made it into a list of list of alphabets. Like ये एक एक एलिमेंट आ गया तुम लोगों का, जैसे ये ए ई आई हो, इसमें कोई गैप नहीं था, इसमें एक एक करके आ गया. You can just make a list out of a string. So अभी तक किसी को डाउट है इसमें, लाइक कोई डाउट या इसमें कुछ भी, एनी डाउट? नहीं. नहीं ना, ओके फाइन. सो दैट्स इट, लिस्ट एंड स्ट्रिंग. ओके Okay, bye. Thank you. ओके देन, बाय बाय.